स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे एंड आई होप यू आर ऑल वाचिंग द वीडियोस जो प्रीवियस वीडियो मतलब अपलोड किया था. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू इट एंड टुडे वी विल लर्न मोर रिलेटेड टू pot plants. So in the previous video हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में सीखा था. How to take care for the potted plant, and we have learned that how you have to choose the correct pot कैसे choose करना है, how you have to choose the potting mix, and just a small recap. Okay, I'll just go through once again, and how you have to choose the plant, कैसे plant को choose करना है, right, and how to pot the plants. So all this we have discussed in the previous video. And in today's class, we will discuss more related to management. So here we go. In this slide, you can see it is written about feeding, and second is about the deheading. So, what do you mean? What do you mean by feeding? So feeding, like where plants growing in a container. Okay, जो प्लांट कंटेनर में आप ग्रो कर रहे हो उसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है. दे रियली नीड मोर फर्टिलाइज़र कंपेयर टू द प्लांट दैट आर ग्रोन इन द ग्राउंड, लाइक इन द ग्राउंड. ओके, जो ज़मीन में आप ग्रो करते हो, ओके, लाइक ओपनली विच यू ग्रो ओपनली, एंड द प्लांट विच यू ग्रो इन द पॉट्स. सो जो प्लांट पॉट्स में आप प्लांट करते हो उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है. एंड द मोर यू वाटर द मोर क्विकली यू फ्लश द न्यूट्रिएंट आउट ऑफ द सॉइल. जितना आप वाटरिंग करते हो, ऑब्वियसली द प्लांट, ओके, इन द पॉट, दे नीड वाटर फ्रीक्वेंटली, एंड दे नीड इट लाइक व्हाट आई विल से, दे नीड इट प्रॉपरली. ओके, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर वाटरिंग की ज़रूरत होती है पॉट प्लांट में. सो फॉर दैट, जैसे आप प्लांटिंग करते हो, सो we all know, and we have already mentioned, हम लोगों ने मेंशन भी किया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि जो होल है, ओके, द होल विच इज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉट, वहाँ से फिर आपका मतलब ना, लाइक जो अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो वहाँ से निकलता है. सो उसके साथ साथ सॉइल भी निकलता है, जो न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल में वो भी निकल आता है. ओके, इट जस्ट कम्स आउट फ्रॉम दैट होल. तो what you have to do, feeding, that's why feeding is important. Okay, feeding important here, because the more you water, the more quickly you flush the nutrients out of the soil. So it's good to use a time release fertilizer. Okay, like you choosing the potting mix of a like you have to really take care. And if you want to have a really healthy and happy plan, अगर आपको healthy और happy plan मतलब चाहिए, okay, which is healthy, so you have to feed it. Okay, you can feed it with what? With a liquid or water soluble fertilizer. Okay, I hope you know what is water soluble fertilizer. Okay, if you don't, I'll just give you one example. So compost tea, TEA. Okay, and then like TA, it's not what I'll say, the tea that you drink. ये मतलब वो वाला टी नहीं है जो आप पीते हो, चाय नहीं, वो वाला नहीं है. लेकिन इसमें भी मतलब इसको कैसे बनाते हैं, इसमें मतलब you have to add, okay, you have to add cow dung, you have to add like different material जो मतलब आपको नेचर में ही मिलेगा. Okay, and yeah, you can even add jaggery. Okay, गुड़ जो बोलते हैं, गुड़, उसको भी ऐड करोगे उसमें, and then you have to mix it. Okay, you have to mix it, and you need the soil from the forest also. जो soil forest से मिलता है उसको आप उसमें mix करो उस पानी में ही. Like suppose अगर आपका जो bucket है वो मतलब it's like just say 30 liters. No. Suppose if your bucket is this one
15 लीटर का ओके आपका बकेट है, तो उसमें बस आधा पानी डालेगा. यू जस्ट पुट हाफ वाटर एंड देन you mix jaggery, okay, jaggery, and then you can add this one also. If you jaggery, that is हिंदी में गुड़ बोलते हैं उसको. उसके बाद जो फॉरेस्ट सॉइल है उसको भी उसमें मिक्स करो. आफ्टर दैट, after mixing this, then you can mix this one. जो स्टार्च है, जो पानी जो निकलता है जब आप चावल पकाते हो, ओके, सो जब वो राइस बॉयल हो जाएगा तो जो पानी है, ओके, एज सोन एज इट गेट बॉयल यू जस्ट ड्रेन द liquid, okay, the water, okay, from that rice, okay, and then वो water, वो जो पानी है, जो starch water है, उसको mix करो उसी bucket में. okay, cow dung, and then this one, cow urine also you can mix, and then jaggery, गुड़, okay. और उसके बाद क्या, फॉरेस्ट सॉइल. अगर आपको फॉरेस्ट सॉइल भी नहीं मिलता है ना, तो जहाँ पर जब चींटी लोग घर बनाते हो, ओके, फ्रॉम द सॉइल, तो वो सॉइल बहुत अच्छा होता है इफ़ यू मिक्स इट, बिकॉज इट हैव प्रोटीन, ओके, इट हैव प्रोटीन इन इट. सो यू कैन टेक इट एंड देन आफ्टर दैट यू मिक्स इट ऑल टुगेदर, एंड या द स्टार्च वाटर जो राइस से आपने निकाला उसको भी मिक्स करो. देन यू जस्ट कीप स्टिरिंग इट, ओके, उसको घुमाओ, जस्ट कीप स्टिरिंग इट लाइक फॉर 20 to 25 मिनट्स. और फिर उसको फिर ड्रेन करो, मतलब जस्ट टेक द वाटर पार्ट ओनली, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ सॉलिड पार्ट रहेगा ना इन दैट बकेट. सो जस्ट टेक द वाटर पार्ट. तो वो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया, ऑर्गेनिक वाटर फर्टिलाइज़र हो गया, उसको कंपोस्ट टी बोलते हैं. ओके, और ये मतलब आजकल स्पेशली इन द विलेज एरिया दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस. जो मतलब जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ICR में काम करते हैं, ओके, विच हु हेल्प द फार्मर, सो दे आर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस ऑल्सो. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द विलेज एरिया, जहाँ पर विलेज एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर वो लोग मतलब उनके लिए फर्टिलाइजर इज जस्ट, मोस्ट ऑफ देम दे यूज काउडंग ओनली, जस्ट काउडंग, एंड देन that's all. मतलब ज़्यादा they don't they just use this one chemical जो market में मिलता है, they use that. But we have to avoid that, and to avoid that we have to use organic. ठीक है, मतलब it can take time, okay, it might take time for growth and all, but if the whole nation, अगर हमारा पूरा मतलब देश इसको practice करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. It will be very nice for our country. So that's why. And then this is one example, okay, one example of liquid fertilizer, okay, liquid fertilizer or water soluble fertilizer. And you can what, because it is not harmful, it's organic, so you can give it every couple of weeks, okay, every couple of weeks you can use it according to the package direction. And it even if you practice and if you follow that one compost tea, तो ये मतलब इसको भी it can avoid, not avoid, but it can help in this one. जो insect है वो भी मतलब they won't come to the plant, okay, because of that. It act as a this one pesticide also, pesticide की तरह भी act करता है. और जो pest है या फिर pest disease है, like it hardly get formed in that flower, okay. So this was about feeding. I hope you all understand, because it is really important for the pot plant, okay. Pot plant में ज़्यादा important है rather than the plant which is grown on the ground, okay. So this is related to feeding. Now we'll come to deheading, okay, like, or deadheading. So what is this? This is just in simple word अगर बोला जाए तो it's pinching or cutting. I hope you have heard about pinching and cutting, right? So या फिर like when you perform this, especially अगर flowers में बोला जाए तो जो carnation है, carnation flower, उसमें भी मतलब like this one debudding, okay, it really is in practice, बहुत practice करते हैं. So pinching or cutting of the faded bloom, okay,
okay, faded bloom. Suppose already the flower has bloom, now it's fading, वो fade हो रहा है, ठीक है, it's becoming faded and it's about to wither. So you have to do this one, you have to cut it or you have to do pinching. Like you can see here the picture, you can see here, okay, how they cut the top portion, okay, the already bloom. यहाँ पर मतलब it's not the bud which is being cut, but it is the bloom flower, okay, जो already bloom है, okay, which is already blooming. So that one you have to cut, and it is essential to do that, and it encourage a plant to keep producing more flower. और ये मतलब encourage भी करता है, it encourage के मतलब growth में, okay, suppose you already seeing, okay, the plant is growing, मतलब flower grow हो रहा है, and then the top portion, and then from the side also there are like some buds that are coming out, okay, जो bloom होने से पहले जो like buds है, okay, so उसका मतलब if you do this deheading, या फिर अगर आप जो top portion है आप काटोगे तो ज़्यादा production होगा flower का, okay, from the side there will be more production of the flower. So this is good if you practice it, especially in the pot plant, or it will be very it will be very nice, because obviously if you are planting a flower in a pot, you want it to bloom very nicely और बहुत सारी flowers हो, okay, so you can practice this deadheading, pinching or cutting of the faded bloom, okay, especially जो top portion वाला bloom है, जो पहला bloom होता है. So this is about this one, deadheading. I hope you got this, and then I'll give you more so that you will understand more in the notes. So yeah, and then this picture, now the first picture you already know, that is about the fertilizer, adding the fertilizer, okay, and then second is about the deadhead. Now we'll come to the next slide. Now in this slide, from the heading only you understand, okay, keep pests away, okay, how I'm gonna keep the pests away. So how you have to stop, कैसे रोकना है, okay, pests को. So here once you put your plant outdoor, suppose अगर आपका pot plant भी है, okay, your pot plant, then you put it outside, okay, so you have to realize that there is a risk for rabbits or squirrel or even deers, okay. You have to keep this in mind. अगर आप बाहर रखोगे तो risk हो सकता है, okay, जो rabbits है, squirrels है, and all other kinds of animals who would just love to get a taste of your outdoor plant, जो मतलब taste करना चाहेंगे आपके outdoor plant को, okay, because they can come and they can eat it, okay, so they can destroy. So to combat this thing, या फिर to control this thing, think of ways you can keep your potted plant safe. Potted plant को कैसे safe रखना है, you have to think this. You have to screen in porch, or if so, there is a perfect place for an outdoor plant. If this isn't an option, a fence कर सकते हो. You can put like bamboo, this one जो bamboo stick and all, then you can just put it like fences, okay, in the garden. Is also better than nothing. इसको भी मतलब it can protect the rabbits to enter. Yeah. So and then hanging basket are also good, as they are out of reach of most animals or squirrels. So you can, if you don't want to put on the floor, so you can even put in your veranda, but as a hanging basket. Don't put it on the floor, don't put it on the veranda floor, but design it in such a way that you are putting it in the hanging basket. Okay, so this is one way. ऐसा नहीं है कि you have to put like chemical या कुछ ऐसे मतलब जो उनको हानि पहुंचाए, okay, so you shouldn't do that, but yeah, you have to protect it, because you have to see from both the side के मतलब आपके प्लांट को भी नुकसान नहीं होगा, और जो आपका फ्लावर है, जो आपका पौधा है, उसको भी नुकसान नहीं होगा, और एनिमल्स को भी नुकसान नहीं होगा, okay.
because we have heard so many example like कैसे मतलब how people they used to put different chemical in some area. Okay, I don't know if you have any idea about this, but in some area of India also, and in other countries I don't know, but in India I think you have heard about the reason, the what जो हुआ था. Okay, what has happened in the previous, yeah, in the previous case, that how an animal, okay, I think it was an elephant, how he was just going to the garden, मतलब जो खेत है वो वहाँ पर गया, and then how like no, it's not a, I think it was a female elephant, how it went to the field, वो field में गया, okay, जहाँ खेत है वहाँ पर, और कैसे मतलब how the mouth of that female elephant, it just got burst because she ate the fruit that was kept in the field. Okay, that's not the way to prevent. Okay, वो मतलब क्या बोले जाए मतलब it's not a solution, वो solution नहीं है. आप मतलब प्रिवेंट करोगे जो एनिमल्स है, या फिर लाइक रैबिट और डियर्स एंड ऑल. Already there are so many animals that are getting extinct, so we shouldn't practice. Okay, as a horticulturist, as an agriculturist, you have to not only think about बस आप जो फूल पौधे हैं या फिर जो vegetables है जो भी, you don't have to think only about them, but you have to also think about the animals. Okay, so for that reason इसलिए we don't promote using chemical for animals. Okay, so but yeah, you can just prevent them by using this one, by using your own idea. Okay, keeping your pots in the safe place. Safe place में कैसे रखना है, that is up to you. Put it in the safe place, या फिर fences बनाओ. Okay, just मतलब make a partition, फेंसेस बनाओ ताकि मतलब जो रैबिट्स है वो अंदर ना आ सके. यू कैन डू दैट ऑल्सो. सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस दैट यू कैन फॉलो. या फिर अगर आप जो आपका वरांडा है वहाँ पर ही आप हैंगिंग बास्केट भी कर सकते हो, तो दे वोंट रीच. ओके, दे वोंट रीच द हैंगिंग बास्केट. सो एंड प्लस इट विल दैट ऑल्सो इट विल लुक ब्यूटिफुल. अगर आप ऐसे भी डिज़ाइन करोगे तो वैसे भी इट विल लुक ब्यूटिफुल ओनली. सो these are some measure that you can follow. Okay, जो आप follow कर सकते हो, how to keep the pest away. So this was about the like keeping the pest away.